just sacrifice his life for our country, and it's very heart touching story. Okay. Pallavi, how about you? My favorite movie is Miss India. Mr. India, Miss India. Miss India. Miss South, India. South. South. Oh, I South. watched it. Acha. Okay. Because this movie is very emotional, and about this movie about a girl. This movie about a girl business struggle. मुझे ऐसा लग रहा है मैंने लास्ट के सेंटेंस में कुछ गलत किया है, मैं इतना प्रॉपर नहीं बोल पाई। मैम That's okay. ये सेंटेंस कैसे बोला जाएगा, जैसे कि हम उस मूवी में देखते हैं कि कैसे वो इंसान कन्वर्ट होता है, लाइक So in that movie, a hard-hearted man or a goon, because वो गुंडा भी होता है, right? So a hard-hearted man or a goon get converted to a polite man. ठीक है? Get converted to a polite man. Okay. Pallavi, you speak, no problem. ठीक है? अभी I'm not correcting you too much because अभी basics थोड़े clear होने जरूरी हैं. ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, just speak. All right. So my another question is that if you, this I already asked Ruchi, so I'm going to ask something else. Who was your favorite teacher in your school and why he or she was your favorite? Yes, if you are ready, you can speak. My favorite teacher, my favorite teacher is not in my school, but nowadays I respected and very intelligent ma'am, Trilekha ma'am. Okay. And I respected because he most effort for my learning English skill. Okay, thank you for the compliment. Yes, Ruchi. My favorite teacher at school is Shah ma'am. His math teacher We have talked was about. was Shah ma'am. She was अच्छा, अब हमने used to पढ़ा है ना? हाँ. Okay. Shah ma'am. अब एकदम से कन्वर्ट करना पड़ेगा. Used to. She teach. She teach. She used to hit on a high. She used to teach. She used to teach. Very good. She used to solve my all maths problems, and she used to understand all students' problems, how to solve maths questions, and how to improve tables, learn tables, and how to write in exam paper. She told everything. So okay. Pallavi? Ma'am, yes, आएगा ये she used to hit on
and when I was not finished work, क्या बोलना चाह रहे हो आप? ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। She used to scold me. She used to Scold me when I would not complete my work. when I not When I Cold would मतलब punishment भी हो। डांटना। हाँ, फिर she used to when give when I देखो इसमें दो चीजें होती हैं, या तो आप कह सकते हो she used to scold me when I would not do my work, ठीक है, और when I used to not do my work, used to भी यूज कर सकते Used to। पास की बात है ना, हमेशा होता था जो हमने पढ़ा है ना। हाँ। My favorite teacher is Rajendra Modi sir because he was clear every concept very easily. हाँ, वो करते थे। हमने used to का यूज पढ़ा था। वो करते थे। हमेशा करते थे, पास की बात थी। तो सबसे पहले वो के लेके आएगा ही, फिर उसके बाद Used to। फिर उसके बाद वर्ब। He used to Solve। क्या पल्लवी? clear. हाँ, yes He was to he used to. Okay, he used to clear every concept yes, very nice, very easily. हाँ, very easy, yes। ठीक है, तो अभी यूज टू का यूज करना सीखो आप लोग। कोई भी ऐसी बात जो पास्ट की जो हुआ करती थी, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल यू कैन से माई मदर यूज टू कुक लॉट ऑफ गुजियाज ऑन होली, ठीक है, पहले होता था अब नहीं होता, तो माई मदर यूज टू कुक लॉट ऑफ गुजियाज ऑन होली। वैसे ही कोई एक चीज बताओ जो आप पहले करते थे फेस्टिवल में यूज टू यूज करके और अब नहीं करते, किसी भी फेस्टिवल का यूज टू यूज करके। नाउ यू डोंट डू दैट। I used to, I was child, I used to fire many crackers, but now I don't like crackers. fire many crackers, मैं इसका क्या फायर मतलब फोड़ते थे, क्रैकर्स मतलब बहुत सारे पटाखे फोड़ते थे। पटाखे फोड़ते, फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स, बट नाउ आई डोंट लाइक। ओके, ग्रेट। यस पल्लवी, ऐसे ही बोलना है। नेक्स्ट। When I'm child, I used to. पल्लवी पॉज लेके आराम से सोच के बोला करो। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, एम नहीं आएगा। अपने आप को अवेयर कराओ, अटेंटिव रहो, वरना ये मिस्टेक बहुत ही जाएगी, आप कभी इंप्रूव नहीं करोगे। एवरी टाइम आई वोंट बी देयर टू करेक्ट यू, है ना? यस। When I'm child, I used to. यू कैन आस्क अगर कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है। इसमें थर्ड फॉर्म आएगा ना? नहीं, ये देखो, ये इसलिए होता है क्योंकि आप वीडियो के कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं समझते। यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म आपको भले ही 10 बार वीडियो देखना है, पर कॉन्सेप्ट, आप अच्छी फ्लुएंसी है, आपके प्रोनाउंसिएशन अच्छे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो आप, इसलिए आप कॉन्फिडेंस नहीं हो आ रहा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो आप खुद को लेके, है ना? यस, आगे बढ़ो। यूज टू। When I child, I was child. I used to sweet. I used to eat sweet things so much. यस, गुड गुड, बस ऐसे ही तो बोलना है। गुड। यस हरदीप। I used to swim. When I was a child, I used to swim in the river. Yes, good. Have you actually swum
swim at the Yes, 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 definitely. So have you learned swimming in the river? Yes. Who taught you? On your own or somebody taught you? क्या मैम? मतलब किसी ने सिखाया या खुद से सीखा? On your own मतलब खुद से? Friends, with friends. Good. How old were you at that time? 28. 28. These days kids learn swimming at 4. आजकल के बच्चे 4-5 साल में स्विमिंग सीखते हैं. Even I learned swimming at around 5-6 years back. 5-6 years back. My husband also swim at well. What do you want to say? क्या बोलना चाह रहे हो? मेरे हस्बैंड भी मतलब कुएं में सीखे. Well. कुएं में केड़ी स्विमिंग होती है? Must be very big. Then well must be very big. बड़ा होगा फिर कुआं. Well. हाँ मतलब जो अपना नॉर्मल खेत में कुएं होते हैं ना. हाँ वो वाले. वो कुएं नहीं होते, वो डिग्गी होती है. एक डिक्की नहीं होती, वो कुआं है. नहीं, we have, even we used to have in our farms, we used to have a big well. हमारे घर पे भी बहुत बड़ा कुआं था. काफी था, मतलब स्विमिंग हो सकती थी उसमें. हो सकती थी. मैम डीप कुआं भी तो था वो वो. होता है ना जो बाल्टी डालते हैं और हाँ निकालते वही हैं. हाँ होता है. अच्छा, ठीक है. आप क्या बोल रहे हो? आप जो बोल रहे हो, व्हाट इज दैट? मैम वो मोटर के आगे डिग्गी नहीं होती वो. हाँ वो उसको अलग. हाँ वो जो वाटर पंप इरिगेशन के लिए जो सिंचाई. हाँ, वो मैंने आई हैव प्लेड अ लॉट इन दैट. बहुत खेली हूँ मैं उसमें, बहुत ज्यादा. ओके, सो नाउ आई वांट यू टू आस्क मी सम क्वेश्चंस. अच्छे से क्वेश्चंस बना के, जो क्वेश्चन आपके मन में आए. लेट्स डू सम स्पीकिंग प्रैक्टिस ऑन क्वेश्चंस नहीं बनते आपसे, ठीक है? पल्लवी, एज ए फ्रेंड कह रहा हूँ आपको, आप बेटर हो, पर आपके ऑफिस का स्ट्रेस होता है, तभी आपकी थोड़ा वो होता है, आपको इरिटेटिंग होती है आपकी. शी इज नॉट वेल आल्सो सिंस 2 days. अच्छी भी नहीं है तबीयत. थोड़ा जो है ना वो आपका वर्क होता है. मैंने क्या HDFC में बैंक में काम किया है, तो तभी मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. पर देखो, आई अग्री हरदीप, आई अग्री. लेकिन क्या होता है यहाँ पे ना, आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी. इफ यू विल नॉट इम्प्रूव, अगर अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे तो इसी तरह के कामों में फंसे रहोगे लाइफ लॉन्ग. तभी मैंने जॉब लेफ्ट कर दी. मैं हाँ, अगर अपने मन का कुछ करना है, देन यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ. ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चंस. I used to play kabaddi when I I was child. मतलब आगे क्या बोला आपने? When I was child, I used to play the kabaddi. ठीक है, ठीक, राइट. When I was child, I used to play game with English teacher. गुड. द सेम काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू बोथ कैन गिव. ऐसा भी दे सकते हो आप, ठीक है? ऐसे एग्जांपल्स भी दे सकते हो आप लोग. I was child. I play kho-kho I in used to our play. school. I used I to. used to play kho-kho. अच्छा, Ruchi, tell me one thing that you used to do before marriage, but you don't do now. One thing that you used to do before marriage. मैम आप तीनों एक जगह से हो? Luckily, yes. Ruchi and I are neighbor. We almost मतलब we are in separate buildings. Same township. But we hardly meet. हम शायद ही कभी मिलते हैं. हाँ, बहुत तो rare. पल्लवी कहाँ से है मैम? Pallavi is from Indore, but from other area. So I've never met Pallavi. Pallavi से मैं भी कभी नहीं मिली हूँ. मैम आप मुंबई से हो? No, I am from Jaipur, but I live in Indore. But I have traveled in various cities: Pune, Mumbai, Delhi, मैम Gurgaon. रिसेंटली कहाँ पर हो आप? इंदौर. ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, MP. MP, महाराष्ट्र? नहीं,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अच्छा, अलग है। सेंटर ऑफ अच्छा, इंडिया। मध्य प्रदेश। तो इनका इंदौर पल्लवी कहाँ से है? इंग्लिश, इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश। वेयर आर यू फ्रॉम? पल्लवी। Basically, I am from Maharashtra, but currently I live in Indore. सेम ईयर। विच इज लोकेटेड इंदौर? Currently I living in Vijayanagar, Indore. वेयर डू यू स्टे इन इंदौर? वेयर डू यू स्टे इन इंदौर, ऐसे पूछते हैं, इंदौर में कहाँ रहते हो? ठीक है, वेयर डू यू, विच वेयर? इन इंदौर। ठीक है, यस। कौन से थिंग बताओ जो मैं करती थी। रिसेंटली आई डोंट नो इंदौर, हाँ, अबाउट इंदौर। he doesn't know about इंदौर। ओके। अरे भाई स्पीकिंग कर लो। ऐसे मतलब शादी के पहले मैं खेलती थी, पर अब तो आई यूज्ड टू प्ले। आई यूज्ड टू प्ले बिफोर मैरिज? आउटर गेम्स, बट आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम। नाउ आई एम नॉट प्लेइंग। ठीक है, पल्लवी एक चीज जो आप मुंबई में करते थे इंदौर में नहीं करते। मैम हाउ आर ओल्ड यू? You're asking me? Yes. यस। Yes. Yes, yes. आई थिंक मैम दैट एक्चुअली मैं वो चलो जब तक हरदीप को सोचने दो। यस पल्लवी। हाँ, मैं एक्चुअली वो वर्ड भूल गई जो मतलब हम बोलते हैं कि किसी चीज की प्रैक्टिस करना, जैसे एनसीसी में होती है नॉर्मली कि कोई फिजिकल एक्टिविटी। I used to do a lot of practice, or I used to do a lot of physical activity. ओके, आई यूज्ड टू Physical लॉट ऑफ I used to do. Used to के बाद verb आएगा। ठीक है, आई वाज I used to और verb। what time is your marriage? व्हेन Are आई you married? ठीक से पूछो इसको, क्या पूछना चाहते हो आप? आपकी मैरिज कब हुई? When did you get married? When did you get When did you get married? गेट मैरिड। पहले आप एज बताओ फिर बताऊंगी। फिर भी ये अंदाजा। बताऊं मैम मैं? यश 2008। My students always ask me this question, and then we हमारा मस्ती वाला सेशन होता है। I tell them, guess my age. What? I think that 34. Pallavi, what do you think? 2000 Calculation going on.